As for the demand of the students, I'm going to take the class exactly on note making and summarizing. So as you know, I have written on the blackboards the things that the student must ponder. So note making and summarizing is an important skill for a learner, especially an English learner. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ ସମରାଇଜିଂ କରୁଛେ ପିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ନୋଟ୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଛେ ନାଇଁ ନୋଟ୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଫିଜିକ୍ସର ନୋଟ୍ସ କରୁଥିବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ନୋଟ୍ସ କରୁଥିବା ତାପରେ ତୁମର ଗଲା ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟର ଆମେ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ସବୁ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କରୁଛେ ତ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ ସମରାଇଜିଂ ରହିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ନୋଟ୍ ମେକିଂ ଆଣ୍ଡ ସମରାଇଜିଂ ପାଇଁ 15 ମାର୍କ ରହୁଛି ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ 15 ମାର୍କ ରହୁଛି ତ ଏ ନୋଟ୍ ମେକିଂ ଆଉ ସମରାଇଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କେମିତି କରିପାରିବେ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ହାଉ ଏଭ୍ରିବଡି କ୍ୟାନ୍ make notes and even you can summarize the passage टाको केमिति समराइजिंग करि परिबे केमिति नोट्स करि परिबे सेही जिंस ऊपर आज ए क्लास रे हमें डिटेल से कथा हवा सो प्रथम जिंस होची इट्स एन important writing skill note making and summarizing is an important writing skill and especially in this case note making and summarizing we use the important idea important जो जिनस गुड़िक महत्वपूर्ण केवल से जिनस गुड़िक आम फोकस करें नाई एंड सेकेंड थिंग इट इज द कंडेन्स फॉर्म कहले कौन जमती प्रेसी राइटिंग गोटे अच्छी तुम जानी प्रेसी रे कौन करा जाए गोटे पैसेज थी से पैसेजटा को स्क्विज कर दि जाए आउ ताकू जो शॉर्ट वर्सन लिखि दि जाए से प्रेसी सो प्रेसी एंड समरी हैज different things ए दुईटा different जिनस अलग अलग जिनस प्रेसी आउ समरी केमती the प्रेसी हैज a fixed length whereas summary has no fixed length summary रो कौन सी fixed length न थाए आमर सार माने हमको क्लासरूम रे कहि देबे कि नै पिले 1/3 करके लिखबा बट दिस इज मिथ एटा सत नुह as per the chse books that is prescribed for class 12 students here it's clearly written that the summary can have different length its maximum length is up to 1/3 and minimum length can be obtained as 1/10 तो एक विभक्तक 3 अंश ठारू नहीं कि एक विभक्तक 10 अंश पर्यंत समारी ही पारे गोटे समारी कौन सी फिक्स्ड लेंथ न थाए समारीटा डिपेंड करे स्टूडेंट उपरे से केते लिखिबो कोन लिखिबो ता उपरे डिपेंड करूची टोटली कंप्लीटली ठीक अच्छे तो पिले समारी लिखिला पूर्व आमको कौन करार अच्छे व्हाट टू डू ए स्टूडेंट गोटे पिला जो परीक्षा रे समरी लिखुची ताकू प्रथम माने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू से कौन करिवो पिले वीडियो नोटिफिकेशन जाएनी तो समस्त को गोटे रिक्वेस्ट करी कि सांग मान सहित क्लास टाक शेयर करदे तो ये प्रथम जिनस होची रीड टू अंडरस्टैंड मु देख नोट्स करिछि तमरो जो क्लास थिला से क्लास टाक मु नोट्स करिछि पिला माने जानिबे बोली के तो प्रथम जिनस होची कोन एटा होची head notes this is your head notes of the what class रो head notes से मु कोन लिखिली how to summarize summarizing करिवा किपरि how to summarize this is the head notes तार सब notes ये these are the sub notes है तो एटा जदी h1 हे गला h1 कहले head notes 1 these are the sub notes एगुडा को होची sub notes getting me सब नोट से प्रथम पॉइंट है रीड टू अंडरस्टैंड सो व्हाई शुड वी रीड समारीटा को हमें पढ़ा पैसेजटा को कहीं पढ़ा टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंटेंट इज जे को विषय रे लेखा है बिकॉज वी नीड ए टाइटल आमको टाइटलटा भी दबार अच्छे बुझी सो मोर ये टाइटल हम नोट मेकिंग एंड समराइजिंग मोर टाइटल है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग देयर आफ्टर आई एम मेकिंग नोट्स गेटिंग मी बुझा तुम बही रे जो पाठ अच्छी से पाठटा को मुझे बुझे दूसरी तुमको तो प्रथम जिनस हूँ वी आर टू रीड द पैसेज सेकेंड जिनस आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स आफ्टर रीडिंग द पैसेज गोटे थर बुझिले जदि न बुझिले आउ थे पढ़ रीड इट फॉर द सेकेंड टाइम
Then identify the what main points. गोटे पैसेज अच्छी से पैसेज रे प्रत्येक वाक्य जे गुरुत्वपूर्ण यह माने नुह तेणु फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू डू दैट वी आर टू आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट. सेकंड थिंग, देन लीव आउट द इरेलीवेंट पॉइंट्स. लीव आउट कले छाड़ दवा. लीव आउट द इरेलीवेंट पॉइंट्स. कौन करवा? इरेलीवेंट पॉइंट सब को छाड़ दवा. वी आर टू लेफ्ट आउट. देन जो जिनसर कौन सी आवश्यकता ना एक्जाक्ट डायरेक्शन अच्छी से विषय भी आम कथा आगू से पॉइंट गुड़ा को वी मस्ट लेफ्ट आउट से आम छाड़ीद. थर्ड थिंग, ड्राफ्ट समरी. ड्राफ्ट समरी इज ए वाइटल पार्ट. इट्स नॉट बीइंग टच इनसाइड द क्लासेस बट आम तापर गोटे ड्राफ्ट समरी और रफ समरी कही पार. ड्राफ्ट समरी आम करवा. ड्राफ्ट समरी लिखि सारापर पुणी चेंज चांज करके मेन समरी करवा. मन रखिए पे ड्राफ्ट समरी जदि करूच, इफ यू आर मेकिंग ड्राफ्ट समरी इनसाइड द क्लास, then the examiner who is evaluating your copy, he must understand that the student himself has done the summarizing and the students had understanding skill, that's why she has done the draft summary. Getting me? Simple things are there guys, simple things are there. तापर एला कोन ड्राफ्ट समरी. तापर आमे जिबा फाइनल समरी ऊपर को. Then thereafter, if there will be some change, we have to make those changes and we will go for the final summary. Final summary लिखिबा. क्लास को स्किप करिबा नहीं. मु शेष रे कहिबी what is the easiest way and how can we make it. बहुत सहज. मु शेष रे वर्तमान मु टेक्स्ट बेस रे जाउची. whatever are there in your books को बेस करके जाउची. तापर मु कहिबी what are the tricks and tips. तापर एला बिले वर्तमान लैंग्वेज ऑफ ए समरी. समरी रो लैंग्वेज सब कौन हम केमती लिखा. हाउ टू राइट ए समरी. एक्जाक्टली व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ ए समरी. समरी रो लैंग्वेज कौन हवा दरकार. ठीक तो मन रखिबा जे हमको वर्बोसिटी रो आवश्यकता नहीं. वर्बोसिटी रो कौन सी आवश्यकता नहीं. सो वी कैन यूज सिंपल लैंग्वेज. यूज सिंपल लैंग्वेज. साधारण शब्द सब व्यवहार करिबा. Good evening everyone, whoever are there in the class. So use simple words. साधारण शब्द. एमती नहीं कि नहीं मत भलो वर्ड मिलू नहीं कि ये वर्ड मु व्यवहार कले मार्क कटिबो. नो नो नॉट लाइक दैट. जे भी कहूची से भूल कहूची. सो यू आर टू यूज सिंपल वर्ड्स. व्हाट एवर वर्ड्स यू नो, यू आर टू यूज दोज वर्ड्स ओनली. जो शब्द गुड़िक तुम जानिच से शब्द गुड़िक व्यवहार कर. सरल भाषा लिखा चेष्टा कर. निज भाषा लिखा चेष्टा कर. ठीक तापर एला अवॉइड सेम वर्ड्स. डोंट ट्राई टू इमिटेट द वर्ड्स फ्रॉम द कंटेंट. एठी डोंट ट्राई टू इमिटेट द वर्ड्स फ्रॉम द कंटेंट. सो ट्राई टू अवॉइड द सेम वर्ड्स दैट्स आर बीइंग देयर इन द पैसेज. पैसेज रे थिबा समस्त शब्द को उतारी दबा अपेक्षा जदि तुम द्वारा होउची जदि होनी आम पाखे ऑप्शन नाही. वी आर टू माने फॉलो द पैसेज व्हाट एवर वर्ड्स आर देयर. बट if we can change the word, if we are able to write in our own way, आमे जदि निज भाषा रे लिखि परिबा ताले सबठु भलो पिले. बुझिला. सो सेकंड पॉइंट हला अवॉइड सेम वर्ड्स. से माने पैसेज रे थिबा वर्ड गुडी को ट्राई करिबा आमे अवॉइड करिबा पाए. ठीक अछि. नेक्स्ट आमे जिबा शॉर्ट एक्सप्रेशन एंड सिंगल वर्ड्स. ट्राई टू यूज शॉर्ट एक्सप्रेशन एंड सिंगल वर्ड. शॉर्ट एक्सप्रेशन कहले कौन जिते बड़े लॉन्ग सेंटेंस गुड़िक अच्छी. इफ देयर आर लॉन्गर सेंटेंसेस ट्राई टू स्क्वीज देम. ट्राई टू मेक देम शॉर्टर. से को छोटो करने चेष्टा करवा. सो इंस्टेड ऑफ लॉन्ग एक्सप्रेशन वी कैन यूज शॉर्ट एक्सप्रेशन. छोटो छोटो एक्सप्रेशन छोटो छोटो फ्रेज आम व्यवहार करवा. एंड आउ गोटे जिनस सब इम्पोर्टाट जिनस पे मन रखा कि ट्राई टू यूज सिंगल वर्ड. सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स मस्ट बी देयर. जे गोटे लंबा वर्ड को छोटो करने गोटे लंबा सेंटेंस को छोटो करने आम सिंगल वर्ड सब व्यवहार करि परिबा. वी कैन यूज द सिंगल वर्ड्स व्हाट एवर वर्ड्स आर देयर. बुझिला. तापरे नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि पिले. यस स्क्वीज द सेंटेंस. स्क्वीज द सेंटेंस टा को छोटो करने ट्राई कर. ट्राई टू मेक ए सेंटेंस शॉर्ट. जेमती मोठी देखो पिले मेन पॉइंट्स लिखिदेली. रीड द रीड टू अंडरस्टैंड लिखिदेली. देन लीव आउट द व्हाट इरेगुलर
पॉइंट लिखिदेली देन ड्राफ्ट समरी लिखिदेली फाइनल समरी लिखिदेली तापर ताकू ही मु एनालाइज करके तुमको पढ़ाऊँगी कहीं व्हाई डिड आई डू दैट मु ए जिनसटा कहीं गली दैट स्टूडेंट मस्ट हैव ए कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मस्ट हैव ए आइडिया दैट यस लाइक दिस वी कैन मेक इट ये भाई आम कर बुझीगला तापर जीवा बेले नेक्स्ट जिनस रहा लास्ट जिनस ट्राई टू लिव आउट द एडजेक्टिवल फ्रेज एंड एडजेक्टिवल एक्सप्रेशन एडजेक्टिव विशेषण गुड़िकर जो बहुल व्यवहार होती if there are lots of adjective and adjective expressions try to left out there से adjective expression and adjective विशेषण गुड़िकर कौन सी आवश्यकता नहीं समराइजिंग रे कारण विशेषण कौन विशेष भाव वर्णना करि थाए एक्जाग्जरेशन करबा पई विशेषण सब व्यवहार हेई थाए तेणु आमे कोन करबा विशेषण गुडी को जते परिबा अवॉइड करबा पई ट्राई करबा आमर समारीटा को शॉर्ट एंड सिंपल करबा पई आमर कौन शॉर्ट एंड सिंपल करने क्या आमर समारीटा को कौन छाड़ा आम विशेषण छाड़ा तो ये तो थिला समारी आउ नोट मेकिंग ऊपर छोटिया छोटिया जिनस जो जिनस गुड़िक इनसाइड द क्लासरूम वी आर टू यूज बुझीगला एंड द लेंथ ऑफ द समारी मन रखा द लेंथ ऑफ द समारी डिपेंड अपन द कंटेक्स्ट डिपेंड अपन द कंटेंट कंटेंट कौन क्या लिखाई ताऊपर लेंथ ऑफ समारी डिपेंड करे तेणु यहाँ गोटे मिथ अच्छी कि 1/3 हम समारीटा सो डोंट फॉलो इट सेमती किसी भी नुह समारी मैक्सिमम लेंथ हूँ 1/3 आ मिनिमम लेंथ अप टू 1/10 कहले 100टा वाक्य जदि गोटे सम माने पैसेज अच्छी ताको आम 10टा सेंटेंस रे भी लिखिपर 10टा 11टा भी लिखिपर 10 ରୁ 30 जाए जेकोसी गोटे लेंथ रे आम लिखिपर मन रहा कौन जदि 100टा वाक्यर गोटे पैसेज अच्छी ताको आम 10टा माने वाक्य रु आरंभ करिकी 30टा वाक्य पर्यंत लिखिपर कौन असुविधा नहीं देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग डोंट थिंक एंड डोंट वरी अबाउट द लेंथ ऑफ द समरी सब बिकॉज समरी हैज नो फिक्स्ड लेंथ ठीक अच्छी बर्तमान मु या इरेज करके मोर माने शॉर्टकट हाउ वी कैन राइट हाउ ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन एंटिसिपेट समरी एंड नोट मेकिंग इनसाइड द क्लास आई एम टेलिंग इन माय वे बर्तमान मु मो हिसाब से कहबी मु जहाँ जमी पढ़ाए पिला मानक इनसाइड द क्लासरूम ठीक अच्छे पिले तो प्रथम जिनस हूँ आमको नोट मेकिंग करार अच्छे वी आर टू मेक नोट्स नहीं ये नोट्स कला बेले पिले गोटे जिनस मन रखा इफ द पैसेज कंटेन्स 3 पैराग्राफ मनकर कौन हो 3टा पैराग्राफ अच्छी गोटे जो तुम कौन तुम जो पैसेजटा 3टा पैराग्राफ अच्छी इफ द पैसेज कंटेन्स 3 पैराग्राफ यू कैन मेक 3 हेड नोट्स स्टैंड फॉर तुम जमती एबे मु लिखी H1 H2 S3 so head note 1 head note 2 head note 3 getting me so simple so if the passage contains 3 paragraph एठी प्रश्न उठे सार ताहले कोन मु 4टा करि परिबि नै करि परिबो 5टा करि परिबि नै करि परिबो गोटे हेड नोट्स करिबि यस करि परिबो you can it depends upon the eligibility there is no fixed law there is no fixed rule behind this that you can't make it तुम चेंज करि परिबो नै you can change it it's depend upon you how much you are eligible what is your writing skill I don't know yes or no so हेड नोट्स आम बनई देले अच्छा बर्तमान ये प्रश्न उठे सर हेड नोट्स मु पाइबी कौटू नहीं जो प्रश्न सब क्लासरूम रे उठे मुझे प्रश्न सब कहूँ बोले हेड नोट्स मु पाइबी कौटू मु जानी नहीं मत हेड नोट्स आसे नहीं मु लिखिपारि नहीं पिला माने नॉर्मली किसी पिला कमेंट करते सर मोर इंग्लिश आसे नहीं मु कौन करी नहीं हेड नोट्स मु कौटू पाइबी तो बहुत सहजर पिले एतर कि इंग्लिश इज वेरी 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 इजी ओनली यू नीड टू ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस टू थिंग्स आर देयर टू कीज आर देयर सो फ्रॉम वेयर डिड आई गेट द हेड नोट्स फ्रॉम द पार्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ remember each paragraph whatever paragraph it may be is written on a particular content and a paragraph must have a topic sentence and the topic sentence might have been there in the first beginning of the sentences in the middle of the paragraph in the beginning of the paragraph in the middle of the paragraph at the end of the paragraph this is the rule of paragraph writing
आई एम नॉट टेलिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू मु एठी मो पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई करू नाही जहाँ तुम बही अच्छी से जिन कहूँ +2 फर्स्ट ईयर तुम पैराग्राफ राइटिंग पढ़ी तुम तो ये टॉपिक सेंटेंस कौटी मिले पाऊनी टॉपिक सेंटेंस आमर पैराग्राफ नॉर्मली स्टार्ट होता है टॉपिक सेंटेंस रे नॉर्मली 99% पैराग्राफ रे टॉपिक सेंटेंस रे स्टार्ट होते पैराग्राफ रो तो वी गेट द हेड नोट्स आमर फर्स्ट सेंटेंस रे जहाँ थी एटी कथा उठला सर कैन वी राइट द नोट्स इन फुल सेंटेंसेस in some books it's there but guys as far as I am concerned you mustn't write in full sentence your note mustn't be a sentence your note must be note ta gotte word hai pare a phrase hai pare but note ta sentence no howa darkar it is my concern sentence gudi ko notes kariki lekhiwara konosi justification nahi as far as I am concerned getting me so what to do then you can write notes suppose there is a passage on globalization mone karo globalization upare passage ta achi if there is a passage on globalization getting me so what to do then if there is a passage on globalization you got the title हमको मिल गला note making करिवा पूर्व हम कम करिवा पिले एठी मु लिखि देली impact of globalization impact of globalization so I got the title अच्छा एठी आ गोटे प्रश्न उठे सर एई टाइटल टाकू आमे समराइजिंग टाइम रे लिखि परिबा कि यस लिखि परिबा द सेम टाइटल कैन बी रिपीटेड नो प्रॉब्लम देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल गेटिंग मी द सेम टाइटल कैन बी रिपीटेड व्हाइल मेकिंग नोट्स व्हाइल राइटिंग समरी सो सेम थिंग सो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हां यस यू कैन राइट आलोक यू कैन राइट खाली ग्लोबलाइजेशन लिखले भी होबो खाली ग्लोबलाइजेशन लिखले भी हो बुझेला ना तो तापरे हमरो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मु लिखि जी तापरे एठी लिखली मु माने कर हेड नोट्स लिखली हेड नोट्स 1 देली मु एठी लिखि देली कोन सो ग्लोबलाइजेशन एंड इट इफेक्ट्स ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स effects its effects this is my head notes एटा हेगला मोर हेड नोट्स यार सब नोट्स लिखि देली कोन प्रथम कथा हला फास्ट कम्युनिकेशन सेकंड जिंस हला कोन देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज then third thing eigala kona pire communication then transport then export and import etc export and import so these are the things ei jinso gudi these are the head notes acha ethi to mone kar tomar mone gote प्रश्न sir apun मन इच्छा लिखि देले मन इच्छा मु लिखि नै पिरे मन इच्छा मु लिखि नै ग्लोबलाइजेशन कहले जगतीकरण आम जानी ए जगतीकरण द्वारा आमर कोन होई अमेरिका रे थिबा मो बंधु सहित मो आराम रे कथा पारछु कम्युनिकेशन मिलिला हमको आमे मु कोनसी गोटे जिंस चाष करछि ताको अमेरिका रे नेकी बिकी पारछु अमेरिका बाजार रे हमर जिंस बिक्री होछि यस नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलिला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मिलिला सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन तो ए पॉइंट गुडी का थिबो निश्चित भाबे थिबो गेटिंग मी तो याकू करि देली मु मने कर ये हेगला इंपोर्टेंट ऑफ ग्लोबल दिस इज द टाइटल देन आई गॉट द हेड नोट्स देन आई गॉट द सब नोट्स दिस आर सब नोट्स दिस द हेड नोट्स दिस द टाइटल मिली गला एई बेला मने कर आउ गोटे पैराग्राफ थिला सेही पैराग्राफ सेही जिंस दियो सेम थिंग भी दिया आउ नुआ जिंस जदी अछि सेठी भी मु से बलिया करबी हेड नोट्स काट देबी हेड नोट्स काला पर सब नोट्स काट देबी बुझियला माने आई गॉट माय नोट्स मोर नोट्स मेकिंग मते मिली गला मो नोट्स मते मिली गला आई गॉट द नोट्स नोट मिली गला परे मते कोन होउची मो द्वारा सेंट बैकवर्ड माने सेंटेंस मेकिंग हो नाही मो समराइजिंग करि परिबी नाही मो द्वारा हबो नाही तो मु तो करि परिबी नाही मु चेंज करि परिबी नि किछि करि परिबी नि मते इंग्लिश होउनी मोर कोन करिबी मु व्हाट शुड आई डू अछि ना किछि ऑप्शन अछि यस ऑप्शन इ दिया कोन थिला से ऑप्शन कोन केमति करिबी मु तो एठी बहुत सहज आमे सिंपली कौन करि परिबा पिले ए जो रहिला ए जिंसटा आमे कोठू उठैचे पिले वी हैव गॉट इट फ्रॉम द पैराग्राफ आमे पैराग्राफ रो ए वर्ड सब भी उठैचे तो पैराग्राफ रो आमे जो वर्ड सब उठैचे निश्चित भाबे पैराग्राफ रे सेही वर्ड तो सेंटेंस रे थिबो नै निश्चित भाबे थिबो जो वर्ड सब जो नोट सब उठैचे आमे सेटा पैराग्राफ रे अछि ना नै इट इज देयर इन द पैसेज रे अछि ताले हम कौन करिबा पिले
कौन करवा कहब आमको किछि करिवार नाही ए जो सेंटेंस गुड़ाक आम नोट्स करिचे से सेंटेंस गुड़ाक भी जदि लिखि दौचे आम प्रथम जिनस मन रखा इफ यू कैन मेक सेंटेंसेस देन टेक योर नोट्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग दोज नोट्स सीरियली whatever notes you have made out of those notes make sentences using those notes and write them serially in a paragraph. Point number 1. Point number 2, if you are not able to do so जदि तमे से भली करी पारू ना हो ताहले कौन करियो the sentences or the notes that you have taken out from the passage just brought those sentences से sentence गुड़ी को आना आउ सीरियली माने समराइजिंग कला भलिया लिखि दे टाइटल देकरी विथ टाइटल बिना टाइटल रे लिखिले दैट कैन नॉट बी काउंटेड हबो नाही काउंट हबो नाही बुझियला कोन करिवार अछि यस जो नोट्स गुडा को आमे नै छी से नोट्स गुडा को जो सेंटेंस रे व्यवहार हैछि सेही सेंटेंस गुडी को उठेइबा आउ आमे सेही सेंटेंस गुडी को सीरियली प्रथम रु शेष पर्यंत जो नोट्स नै छी सेही नोट्स गुडी कर सेंटेंस गुडी को लिखि दवा आउ केमति लिखिबा इन ए पैराग्राफ लिखि दवा सो वी गेट द समरी वर्तमान एठी प्रश्न उठे सर केते मार्क मिलिबो सबुठार इम्पोर्टाट कथा आप कहले ना आप जो कहले सर्टकट फर्मुला कहले जे याकू मु केवल नोट्स जो तक तैयारी करछि से नोट्स को नहीं करी मु जदि लिखिदेवी से सेंटेंस गुड़ाक उठेकी मु मार्क पाइबी कि यस केते परसेंट पाइबो यू विल बी अवॉर्डेड 60% मार्क फॉर दिस 60% मार्क विल बी अवॉर्डेड ताहले 8 मार्क जदि अछि यू विल गेट एटलिस्ट 5 मार्क्स at least 5 marks you will get there 5 मार्क मिल जीवो बुझियला 5 मार्क मिल गला देन हमर नोट्स रे तो हमको 7 मार्क मिल गला 6 मार्क मिल गला सो वी आर गेटिंग एट लीस्ट 11 मार्क्स इन नोट मेकिंग एंड समराइजिंग तो एथरे इंपोर्टेंट जिंस होउची बिले प्रथम हैला टाइटल देले मन रखिबा आउ थरे मु कहूची आउ थरे फाइनल माने जीवा पूर्व मु आउ थरे कहि दोची तमन को प्रथम जिंस होउची आमे लिखि देले मन कर 7 नंबर हैला ये 7 नंबर एठी मु देई देली कोन प्रथम लिखि देली टाइटल तापर कोन कली एटा होउची हेड नोट तापर आइला सब नोट्स टाकू 1 देली देन सब नोट्स टाकू ए बी सी करके देली तापर आइला हेड नोट्स 2 तापर आइला ए बी हेड नोट्स 3 तापर आइला ए बी सी डी मोर नोट मेकिंग शेष पिले नोट मेकिंग शेष वर्तमान जीवा समराइजिंग कला बेल को से भलिया मु कोन करबी मने कर 9 नंबर अछि जेटा 8 नंबर थिला याको मु देली 9 नंबर देखी पुणी थर मु लिखली टाइटल एठी लिखली टाइटल देन मु लिखली ग्लोबलाइजेशन has special impacts on modern worlds due to globalization our communication process then exports and input qualities including transport facilities has improved मु जो 3टा तुमको करी से 3टा को देख करके देखेदेली जो 3टा नोट्स मु तुमको आगु जो मैंने देखी जो 3टा नोट्स मु करके देइथिली से 3टा को मु एठी लिखिकी गोटे लाइन रे देखिदेली सो one after another I'll jot down the sentences and I'll get the final summary guys बुझेला नहीं आउ किसी डाउट अछि if there is any question now you can ask me आउ जदी नोट मेकिंग समराइजिंग रिलेटेड किसी क्वेश्चन अछि then you can ask me जदी आउ किसी डाउट अछि बिले
If you have any doubt regarding note making and summarizing, now you can ask me. जदि अच्छी कहार अच्छी कहार इफ देयर इज एनी जदि नाही क्लास टाको सम अप करबा सारी पिले आ समस्त को गोटे छोटिया रिक्वेस्ट करी डाउट ना वेरी गुड आलोक वेरी गुड छोटिया रिक्वेस्ट करी याकू यही क्लास टाको नोट मेकिंग रो सिलेक्शन चिन्मय इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल बेटा नोट मेकिंग रो सिलेक्शन दबाटा मु किंतु प्रैक्टिस कराई देबी सफिशिएंट प्रैक्टिस करे देबी तो मान को वीडियो करके सफिशिएंट प्रैक्टिस करे देबी बट सिलेक्शन इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल तो ठीक अच्छे वीडियोटा को टिके शेयर करदे समस्त को छोटिया रिक्वेस्ट पे जदि वीडियोटा भल लगी निश्चित भाव शेयर करदे सांग मान सहित शेयर करदे नोट मेकिंग रे जो टाइटल रहिबो कौन समारी रे भी से टाइटल यस नारायण यस 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 एजुकेशन रे खाली सिलेक्शन पड़े पास हो यस आलोक नो प्रॉब्लम हो तो आउ किसी क्वेश्चन अच्छी पिले आ जदि क्वेश्चन अच्छी एग्जाम पाखापाखि पुणी थे प्रैक्टिस करवा नोट मेकिंग समरी पुणी थे मुझे क्लास करी सी यू देयर तो वीडियोटा को शेयर करने भूलवा नहीं आउ थे छोटिया रिक्वेस्ट पिले अलग लिखले भी चलो नारायण यस चलो ओके दैट्स ऑल थैंक यू स्टे ट्यून्ड मास्टर ऑफ इंग्लिश परवर्ती पर्यायर आउ गोटे किसी सिलेक्शन तुमको आज दूसरी मुझे करके क्लास सी यू देयर बाय बाय।